Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the news with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 10th of April. The first topic is India and Netherlands launches strategic partnership. Second, states struggle with a vaccine shortage because it has been reported that many states do not have ample vaccine to give to their citizens. The third is India raised concern over US naval exercises. The second last topic is people are far to choose religion. And the last is legal and institutional measure to refuse this problem. Right. So these are some of the important news and editorial reported in today's newspaper. Apart from all the news, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this session. So this would be a fruitful question that will definitely help you in the upcoming prelims examination. And before I proceed with the news analysis, a short announcement that tomorrow would be scheduling a mock test. So this is an open mock test that is scheduled for 11th of April. So this is a time that you can participate. For participating, you have to just refer to the description section of this video where you can register yourself and participate in open mock test. As you know, mock is very important for the prelims examination. And the top 10 scorer will get free classes of Prelims Express and 5 full-length tests of the prelims. So make sure you avail the benefit and you are the top performers. Now starting with the first news, that is India and Netherlands launches a strategic partnership. So in order to boost the water sector, in order to boost the Indo-Pacific region, India and Netherlands are working closely. So this is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement involving India and its interest. So a recent virtual summit हुई है between India and Netherlands, and they have launched a strategic partnership for the water sector. So the prime focus for this time with the Netherlands agreement is water sector. तो वाटर सेक्टर अपने आप में इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स हो या और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो जो इंडिया ने ऑलरेडी साइन किए हुए दूसरी कंट्रीज के साथ. सो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड विद द पोटेंशियल ऑफ वाटर सेक्टर. और दोनों कंट्री जो है इंडिया और नीदरलैंड, दे आर अनाउंसिंग द फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू प्रमोट ट्रेड that is there closely ensuring free and inclusive Indo-Pacific region. तो Indo-Pacific region में क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर करना और एक फ्री और इंक्लूसिव सर्विसेज कैसे प्रमोट कर सकते हैं ये दोनों कंट्री अपने बीच में. सो दैट इज अ प्राइम फोकस. Now they have also agreed to collaborate on joint development of coronavirus vaccine because during the time of pandemic it is very essential and important कि जो vaccines की availability है वो सारे countries में हो. And in light of that इंडिया में अगर आपको मैं बताऊँ vaccines की availability बहुत अच्छी नहीं है. So government is working on that as well because of international cooperation that is there from the other countries as well. Now if we talk about India's expectation, no, talking about Netherlands, what exactly is India willing to do? So India has expressed hope that there would be redemption in negotiation with India EU trade agreement. जो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, खास करके जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, उसको अपकमिंग समिट्स में रखे जाएंगे ताकि इंडिया को कुछ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जो ट्रेड है उससे बेनिफिट मिले. एंड इंडिया हैज सिमिलैरिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड इन डीलिंग विद द ग्लोबल चैलेंजेस. राइट. तो इंडिया और नीदरलैंड दोनों मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करेंगे. दैट इंक्लूड क्लाइमेट changes, terrorism and pandemics. As we know, the country Netherlands is again obliged to all these three sectors because US is also coming to this because जो अभी recently जो नई presidentship है Joe Biden की, he is looking forward with all the multilateral forum adherence that US should be doing. Now, countries that is reaffirmed to resolve the strengthening ties. कंट्री ने बात की, दोनों कंट्री ने, कि कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वो डिस्कस करेंगे लाइक स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक सेक्टर. दूसरी सेक्टर वुड बी वाटर मैनेजमेंट. थर्ड वुड बी एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, अर्बन मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेसेस. सो दीज आर द एरिया अपॉन विच इंडिया एंड नीदरलैंड वुड बी वर्किंग टुगेदर टू मेक दिस सर्विसेज मोर स्ट्रेंथन एंड होलिस्टिक. Now convergence in the area of Indo-Pacific, as we know that Indo-Pacific is again something which is very important for India as well. आप इसके map पर भी देख लें because this can be asked in the prelims examination.
Now, India and Netherlands are developing convergence in the area of Indo-Pacific resilient supply, जहाँ पे global digital governance को promote करने की बात की गई है. And this is something which is again very essential considering the fact of 21st century and COVID-19 era. And both leaders have emphasized in the close convergence between each other, जहाँ पे vision होगी free, open and inclusive Indo-Pacific, right? So these three words are important: free, open and inclusive. Now, though country India and Netherlands are committed to promote open, free and inclusive rules-based anchor in international law, कुछ advanced security और जो growth है उस region पे उस पे भी ध्यान दी जाएगी. And the Netherlands is the third country in the Europe after France and Germany to come up in the Indo-Pacific policy. So definitely the countries that have a friendly relationship with India, and if they are part of that Indo-Pacific policy, it becomes easy for India to implement its rules and regulation and directly adhere the rules that is being implemented by the other countries as well. Now, benefits of partnership, how the partnership is going to benefit the agreement, the partnership that is taking place between India and Netherlands, how that is going to benefit. The first and foremost would be cooperation in the cost-effective treatment technology. Second is converting waste to energy. Applications of AI decision making, mapping of ecosystem services, reclaiming river spaces, basin protection against disaster, river hazardous management, and introduction of new water technology and capacity building, right? So these are some of again the area, the partnership area where India would be focusing to get benefit. Combating coronavirus pandemic, as we know, until and unless the pandemic is over, the global economy is not going to perform well. So both leaders agreed to collaborate on joint development of the vaccines. और इंडिया का ये कहना है कि जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी नीदरलैंड के साथ कुछ वैक्सीन्स में कोलैबोरेशन करने की बात की गई है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, राइट? सो द अमंग एग्जांपल वुड बी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो SSI है पुणे बेस्ड. दिस इज सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर किया है डच की कुछ कंपनीज को and they would be starting their manufacturing there only, right? So a manufacturing hub would very soon would be developed in Netherlands. There would be catering Netherlands as well as India, right? So this is with regards to the combating coronavirus pandemic. Now the second news is state struggle with the vaccine shortage. As I've told you that this was reported in the newspaper that many states are running short of the vaccination and they have only 3 to 4 days of the doses of the vaccine left with them. So this is issues related to development and management of health. So amid the surge which is going because of the mutation that has occurred in the virus, the surge in the COVID-19 cases is again high. और ये सारे स्टेट्स में बढ़ रही है. कुछ 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, इनमें केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए. Now the several states across India are running short of vaccine doses and the state have said on an average they have the doses of 5 to 4 days. 4 to 5 days से ज़्यादा की वैक्सीन किसी भी स्टेट्स के पास अभी नहीं है. Now they have demanded central government to give up this stock until they could last with the 7 days. कुछ states के पास 7 days है. This is the average which I am telling. किसी state के पास 7 भी है, 5 भी है, किसी के पास 2 दिन के ही हैं. So average में 4 to 5 days. Now statement coming from the health ministry, official statement. तो health ministry का कहना है कि health ministry said they have 13.5 crore of doses available and out of which 9.5 crore would be administered until Friday, right? So basically yesterday ही बहुत सारे वैक्सीन्स को ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है एंड द रिमेनिंग 4 करोड़ वुड बी ईदर पाइपलाइन और वुड बी इन स्टॉक इन, राइट? सो व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन, ऑलमोस्ट अगर इंडिया की बात करें जो नंबर ऑफ वैक्सीन इंडिया एडमिनिस्टर कर रही है सिटीजन को, सो 30 to 40 लाख डोजेस डेली दे आर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एग्जिस्टिंग स्टॉक वुड बी अवेलेबल इन 10 to 13 days. This is what officially government of India has to say. Now कुछ कंसर्न है. द फर्स्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग द कोविन पोर्टल बिकॉज इसकी जो डिस्क्लोजर है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल रही है, उसमें डोजेस कहाँ पे लेने हैं इसकी जानकारी है. डोजेस एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर बट दैट वेबसाइट, दैट पोर्टल डू नॉट क्लैरिफाई ऑन द एग्जिस्टिंग स्टॉक विद द हॉस्पिटल.
तो स्टॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसमें एक एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है. द सेकंड इज द स्टेट हैव सेवरल अनदर कंफर्म्ड दे वुड हैव नो स्टॉक बियॉन्ड द 3 to 4 days. तो बहुत सारे स्टेट ने कंफर्म किया है कि 3 से 4 दिन से ज्यादा उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. एंड अगेन दिस विल रेज प्रॉब्लम फॉर द अदर सिटीजन. Now, if you talk about the vaccine supply, 6 crore of the Covishield vaccine were produced by the SII, that is Serum Institute of India, और 1 करोड़ जो डोजेज है वो भारत बायोटेक ने बनाई थी. राइट, दिस इज अवेलेबल एवरी मंथ, सो टोटल बिकम 6 करोड़. एंड कुछ एक क्लैरिफिकेशन आई है, SII के चीफ ने बताया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आदर पूनावाला इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ही सेड दैट 6.5 करोड़ जो वर्ल्ड मंथली सप्लाई है उसके कुछ पोर्शंस बाहर भी एक्सपोर्ट किए गए. राइट, सो उसमें बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसकी ब्रेकअप अभी क्लियर नहीं है. बट आई पर्सनली फील व्हेन अ कंट्री लाइक इंडिया which has a population of more than 130 crore, why we are exporting the vaccine to other countries? No, अगर कुछ ऐसी obligations भी है, for time being we can ask a time, because first and foremost our people, our citizen need to be vaccinated, and this is becoming more susceptible. We have the age group of the people who are residing. तो पहले अपने लोगों को ध्यान देने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में हमें पूरी नहीं करनी, वहां भी देने की जरूरत है. क्वांटिटी कम कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट शुड बी वैक्सीनेटिंग देयर ओन सिटीजन. Now coming to the other news, India raised concern over the US naval exercise. So this is important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping involving India's interest. So several concern has been raised by the UN naval exercise, and India is of the notion that US has not taken permission from India. So what is the exact news? एक drill exercise की गई थी US Navy के द्वारा on the exclusive economic zone, also known as EEZ. right, ये exclusive economic zone होती है जिस पे US Navy ने एक्सरसाइज किया. तो इंडिया का कहना है कि कोई प्रायर कंसर्न नहीं लिया गया, नो प्रायर कंसर्न वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दिस स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज. राइट, और ये कंप्लीट डिस्कार्ड है या फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट है इस तरह की जो चीजें यूएस ने की है. राइट, बट यूएस हैज क्लेम दैट इट हैज अबाइडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ, because see, I mean, whatever US would be doing, they would be backing it. Being a developed country, they would be definitely backing it. But if India is making a concern, definitely there's some catch situation which is there, right? Now US stand on the issues. अगर US के stand बात करें तो US announce किया था उन्होंने जो freedom of navigation operation है, FONOP, FONOP जिसको कहते हैं, उसकी उसने चीजों को यूज किया, उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए. एंड यूएस नेवी हैज असेट कि जो नेविगेशनल राइट है फ्रीडम अप्रोक्सीमेटली 130 नॉटिकल माइल्स पे लक्षद्वीप आइलैंड पे, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आती है, बट उसके लिए कोई प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली, ऐसा कहना है यूएस का. बट डेफिनेटली इंडिया वुड बी मूविंग फॉरवर्ड और इस पे जो भी स्टैंड होगी मल्टीलैटरल फोरम पे वो उसको उठाएगी. बट अभी जो नई प्रेसिडेंटशिप है जो बिडेन की, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉर्डियल. सो लेट्स सी हाउ दे वुड बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अर्जेंटली नीड टू बी एड्रेस्ड. नाउ इंडिया की क्या पोजीशन है अनक्लॉज के बारे में? सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन द पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ एंड सीज. अनक्लॉज के आप बारे में पढ़ लें, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो उसकी जो कन्वेंशन है ये ऑथोराइज नहीं करती है किसी भी स्टेट्स को किसी दूसरे स्टेट्स के EEZ जोन पे या कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो उस पे मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करना, पर्टिकुलरली वेपन एक्सप्लोजन्स हो या वहाँ पे उस स्टेट की जो कंसल्टेशन है वो मैंडेटरी होती है. Then US has avoided this clauses, and they are not obliged to do so, because definitely a country like India, which has an adherence to all international clauses, require a country to take permission before it take any of the drill that is coming, right? So India की अपनी stand clear है. Let's see what US is going to do. Now people are free to choose religion. This is what coming from the Supreme Court, because petition file की गई थी regarding the conversion of the religion, और Supreme Court ने बहुत ही बेहतरीन judgment दिया. They have said that you don't have any right to force people what religion they are going to choose, right? So brilliant inputs coming from Supreme Court. This is important for the general studies paper 2, structure, organization and function of judiciary.
सो एक लेटेस्ट डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पीपल आर फ्री टू चूज देयर रिलीजन, और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पीपल हैव द राइट in provided in the constitution to profess, practice and propagate the religion. It is their duty, it is their choice, which is embodied in the constitution of India. Now कोर्ट ने रिफ्यूज किया इस तरह के पिटिशंस को इंटरटेन करने के लिए, और फ्यूचर में इस तरह के पिटिशंस को ना लाया जाए, इसके लिए कोर्ट ने ये बातें कही है. Now some important remarks that was given by the judge, so I want to tell you, I have noted this. I was not about to discuss this, but I find this to be very interesting and you must know this, how actually the proceeding goes in the Supreme Court. So जो Supreme Court के judge हैं रोहिंगटन फली नरीमन, he said what he said, I quote, he said, why should a person above 18 years of age should not choose his religion? He asked the question to the petition that was filed to the advocate. And what kind of a read petition is this? This is what the exact word was of the judge, right? So he says, will impose heavy cost on you. You need to withdraw it, otherwise there would be severe consequences. So this is what the power of judiciary is in India, right? So you can see how they give the judgment, how they state it, and what are the argument that is there inside the courtroom, right? And the judge said that the fundamental right that is provided in the Article 25 of the Constitution empower the people to profess, practice, and propagate religion in subject to public order, morality, and health. और कोर्ट ने ये भी कहा कि द पिटिशन क्लेम दैट रिलीजन कन्वर्जन इज बीइंग अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. तो जो पिटिशन फाइल की गई थी उसमें कहा गया कि कैरेट और स्टिक अप्रोच के साथ लोगों को कन्वर्जन की जा रही है, बट कोर्ट ने बाकायदे इसे कहा है कि एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू मेक चॉइस ऑफ देयर रिलीजन्स और हुएवर लाइफ पार्टनर शुड बी, राइट. एक रिलीजन के बारे में, फर्स्ट रिलीजन के बारे में और दूसरी लाइफ पार्टनर के बारे में, ये एक इंडिविजुअल की सोल डिसीजन है, इसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती है. Now the court cannot sit in the judgment of a person choice of religion or a partner. और कोर्ट की ये कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोर्ट इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि किसकी क्या रिलीजन होगी या कौन सा लाइफ पार्टनर होगी, वो इंडिविजुअल की डिस्क्रिप्शन है. कोर्ट इस तरह के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है. Now the religious of faith is again a part of fundamental right to privacy. This point to be noted, and you can write in the mains that the right to religious faith is a fundamental right, and this is something which is inclined toward the privacy. Now coming to the other news, this is basically an editorial, legal and institutional measures to the refugee problem. We know that after the Myanmar issues, refugee problem has arisen, and this is important for your general studies paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center. So ongoing crisis जो चल रही है म्यांमार में, we know that the military has taken power और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सिविल वॉर की सिचुएशन राइज हो गई है, एंड द कंसर्न हैज बीन रेज्ड बाय इंडिया, एंड द पॉलिसी ऑन रिफ्यूजी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो म्यांमार एक क्लोजेस्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है. तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यांमार की जो प्रेजेंट ऑनगोइंग क्राइसिस है उसको कैसे हैंडल किया जाए, राइट. और अभी रिसेंटली एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आई थी, CAA, वो भी अगेंस्ट द स्पिरिट है, बिकॉज उसमें कहा गया था कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, जो म्यांमार के लोग हैं या जो बांग्लादेश के लोग हैं. बट इस टाइम पे लोग रिफ्यूजीज आर कमिंग, रिफ्यूजीज को हिंदी में शरणार्थी कहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और इंडिया में रहें. बट इंडिया में जो भी लॉ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो भी अगेंस्ट इसके स्पिरिट में जाती है. तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, लोग आना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया में इस तरह के लॉज भी आने वाले हैं. Now, in case refugees flows to India is unlikely to end in time soon, the geopolitical, economic, and ethnic religious context is something which is very important. Now, ambiguity in the framework, अगर मेन रीजन की बात करें, जो पॉलिसीज है दैट इज इलीगल, जो माइग्रेंट वो कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इंडिया की जो लॉ है वो डिफाइन करती है कि जो फॉरेन एक्ट है 1946 उसके प्रेजेंट प्रोविजंस के थ्रू, राइट. और उस प्रोविजंस में ये कहा गया है कौन से लोग फॉरेनर होंगे. फॉरेनर वो होंगे एनी पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया वुड बी कंसिडर एज फॉरेनर, एंड इंडिया इज लीगली इल इक्विप्ड टू डील विद सेपरेट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोविजंस. और ये एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क जो है एक बहुत बड़ी कंसर्न है, और इससे काफी ज्यादा एम्बिग्युइटी भी स्टार्ट होती है.
Now coming to the other new domestic law that is needed, no, this is something which would be giving a resolution. तो अभी टाइम है, the answer lies on the new domestic law which aims to cater the problem of refugees in India. And second is जो CAA है is not the answer to the problem. Definitely we need to deeply understand the discriminatory nature of the government. And more fundamentally जो CAA है that is act as a refugee avoidance and not the रिफ्यूजी प्रोटेक्शन. तो सीए अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है जब हम रिफ्यूजीज की बात करते हैं. Now, what is perhaps equally important is the domestic refugees law that should give temporary shelter and work permit to refugees that are coming to India because of the problem that is going on other country. Now, there's an urgent need for the clinical address of the issues on the refugees protection और लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर देने की जरूरत है. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी इंडिया रिफ्यूजीज को इंडिया में अकोमोडेट कर सकती है. So these are some of the important measures that government should be taking. Now moving to the MCQs question of the day. The first question is from the current affair that the Global Education Monitoring Report is released by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, United Nations Child Emergency Fund, United Nations Public Emergency Program and World Bank. So you have to say you have to write your answer in the comment section. आपको आंसर देने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे 1 2 3 4 करके जो भी आपके आंसर्स हैं वो लिख सकते हैं. Second, consider the following statement with regards to India Cyber Crime Coordination Center. It is an under control of the Prime Minister Office. The scheme was set up 14C approved on the October 19 to deal with the cyber crimes and comprehensive coordinated manner. तो ये दो स्टेटमेंट है जिसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जो इसके स्टेटमेंट है उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट. तो जो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन आपके नीचे आ रही है उस पर आप कमेंट करें, आंसर बताएं और पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन आंसर सीरीज पे. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू गिव थम्स अप. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.